Right, very good afternoon, everyone. Am I clearly audible and visible? Huh? There's a little hitch. थोड़ा सा internet slow है. It took me 3-4 minutes to come online. All right, seems fine. Very, very good evening. I'm doing very fine. Thank you so much. I hope all of you have given your UITs by now. So today we have to revise the reproduction. See, reproduction in animals and reproductive health. Very related chapters. We have to basically focus on three things. One is gametogenesis, both male and female, which involves the reproductive organs also of male and female, along with the hormonal control and coordination of gametogenesis. So this is one big chunk of the chapter, जिसमें endocrine भी आ जाता है आपका 11th का, जिसमें आपकी reproductive organs भी आ जाते हैं, anatomy भी आ जाती है, and gamete formation भी आ जाता है. Another major thing that we have to talk about is the gametes, their fertilization, the site of fertilization, the events, and ultimately the post-fertilization embryonic development, lactation, parturition, everything like that. So 3 sections in human reproduction chapter and one major section of reproductive health which deals with contraceptive devices and the other which deals with your assisted reproductive techniques. So in all, we have to take up 5 sections today. नीट पोस्टपोन नहीं होगा. नीट क्यों पोस्टपोन होगा भाई? तुम्हारा नीट जिस डेट को है उसी डेट को होगा, तुम ये मान के चलो. हर बार ऐसा नहीं होता है ना? एवरी टाइम पीपल डोंट गेट लकी कि बोर्ड कैंसिल हो जाए और नीट आ जाए, है ना? तो ये नहीं होएगा. तो अपने झूठे ख्वाब देखना छोड़ दो. Am I clearly audible? थोड़ा सा इंटरनेट में लैग है, थोड़ा सा, but I think voice should be completely okay. Voice is maximum, Kishan. This is the maximum voice my system can have, and I always take it at this voice only. Is it clearly audible? It is too hot. Forget about the hairstyle. Rajat, you can improve even 0 marks if you really want to, if you really put in the effort to. Hi, Nagma, how are you? I hope everything settles with time and we give our paper as designated, है ना? तो कुछ भी लेट नहीं हो, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो और सब कुछ टाइम से हो, मैं यही उम्मीद रखती हूँ. चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा. Yes, definitely you can get more marks if you practice questions and you work on your mistakes. The only key I tell everyone कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने और अपनी गलतियों पे काम करने. ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट मेजर सेक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन, जिसमें हम डील करते हैं कि भैया कौन से ऐसे गैमीट प्रोसेस है जिससे मेल और फीमेल गैमीट्स बनाए जाते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कौन से ऑर्गन्स हैं जो टेक पार्ट लेते हैं, व्हाट इज द रूट फ्रॉम व्हिच द गैमीट्स आर रिलीज्ड, इफ दे आर रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी. Let's quickly get started with the difference between the male and the female gametogenesis. Okay, when does the male gametogenesis start? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
जल्दी जल्दी जल्दी. So the male gametogenesis starts at puberty. आपकी NCERT की starting paragraph में ये बोलते हैं कि reproductive events occur after puberty. Can anybody tell me who is responsible for puberty? That is sexual maturity of a human. The age at which we attain sexual maturity. Who is responsible for bringing about that sexual maturity in our body? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Who's responsible for the onset of puberty? Let me give you a hint. It is some kind of hormone. Wrong answer, Meghna. Not androgens. Wonderful answer, Rajat. Your gonadotropin hormones, FSH and LH, the ones which are released from the pituitary after the hypothalamus tells them क्योंकि release gonadotrophic release करो hormones को. अभी हमारे पास time आ गया है sexual maturity का. So androgens will be a wrong answer. GnRH would be an incomplete answer because gonadotrophic release hormones only tells pituitary to release gonadotrophic hormones. The ones which actually act on gonads and bring about sexual maturity are the gonadotropins, which are FSH and LH. So if to ask for which is going to be a more appropriate answer, FSH and LH will be a more appropriate answer, not testosterone, not androgens. Be it male gametogenesis or female gametogenesis, both are influenced by these gonadotropins. अभी male gametogenesis तो puberty पे start होता है. जो female gametogenesis है, it starts way back in the embryonic life only. And these embryonic life initiated gamete formation is arrested at certain stage, which takes activeness or which is activated at puberty. Can anybody tell me at which stage are my female gamete process arrested during embryonic life? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Such that on the onset of puberty, the first time the female, on the onset of basically menstrual cycle, the first complete maturation of the female gamete takes place. And this onset of the menstrual cycle is known as menarche. So जब मीनार्क आता है उस टाइम पर गैमीट किस स्टेज से अरेस्ट होकर बाहर निकलता है? Wonderful. The primary oocyte is arrested in meiosis 1, prophase 1. Which substage of prophase 1? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Which stage of prophase 1 is the primary oocyte arrested at? जल्दी 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 कौन बताएगा? Very very good evening. Manshi, let's quickly get into the sync of the chapter. Any hint? कौन से वो 5 substages है prophase 1 के? Leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, diakinesis. किस phase of prophase 1 में they are arrested? For your information, they are arrested in the meiosis 1, prophase 1, diakinesis. Prophase 1, diakinesis. Not diplotene, not zygotene. They are associated, they are arrested. Who are arrested? The primary oocyte, which is present inside the primary follicle. वो प्रोफेज 1 के डायकाइनेसिस में अरेस्टेड होता है एट मीनार्क. It completes meiosis 1. At menarche, it completes meiosis 1. Right? When does it complete meiosis 2? When does an oocyte completes meiosis 2? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। ऐसा कभी होता है कि oocyte meiosis 2 कंप्लीट कर लेता है, प्राइमरी oocyte meiosis 1 शो करता है, और जब वो meiosis 1 शो करता है, it forms a secondary oocyte and one polar body. Now the secondary oocyte starts with meiosis 2 and gets arrested, है ना, and it completes only when, बेटा वो इंसेक्ट्स के लिए है अरुंधी, वो जायंट पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के लिए जो डिप्लोटीन क्रोमोसोम्स है, ठीक है, हम ह्यूमन ओवम की बात कर रहे हैं। रॉन्ग आंसर, किसने बोला फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंडरी oocyte अपनी कंप्लीट करता है? दिमाग लगाओ, अगर फर्टिलाइजेशन हो ही गई है तो फिर उसको हम क्यों बोलेंगे कि वो कंप्लीटली मैच्योर है? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन it completes its secondary or second meiosis to completely develop into a ovum. तब वो secondary oocyte से एक ovum, एक egg में होता है। कौन है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन? किसने चालू करी थी ये सीरीज? नॉट इवन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। भगवती, पूजा, क्या कर रहे हो? When does a oocyte complete its meiosis 2? After entry of sperm before fertilization। और ये क्वेश्चन मैं कितनी बार दे चुकी हूँ यूआईटीएस में, फिर भी गलत। चांटे आए, वो क्या कहते हैं ना, चांटे आए इतने पता नहीं कितने। When does oocyte completes its second meiosis? After entry of sperm, but before fertilization. Very, very important. But before fertilization. अब याद रहेगा। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है नगमा, फिर भी तुमने पहली बार में गलत बोला था, क्यों भाई? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द गैमेटोजेनेसिस। ये मेजर चंक ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है कि कब बनना शुरू होता है फीमेल गैमीट, कब बनना शुरू होता है मेल गैमीट, ठीक है, किन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में बनता है फीमेल गैमीट, किन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में बनता है मेल गैमीट। क्योंकि फीमेल गैमीट की मतलब जब हम फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आती है, ठीक है कि नहीं? चिंटू मुशु, पेपर पोस्टपोन नहीं होगा बेटा, लाइफ में कुछ भी पोस्टपोन नहीं होगा। सारे ऑफिसेस खुल गए, सारी कंपनियां खुल गई, सब कुछ चालू हो गया है। देयर इज नो कोविड थिंग अभी लेफ्ट सो फार, अंटिल एंड अनलेस जो हमारे बिल गेट का नया अनाउंसमेंट आया फॉर द न्यू वेव, बट currently I don't see anything getting postponed, so just don't get your brains to it at all. ठीक है, so after entry of sperm before fertilization is when the secondary oocyte completes its meiosis 2 and develops into ovum. After fertilization जो आपका फीमेल प्रोन्यूक्लियस है और मेल प्रोन्यूक्लियस है, जब वो फ्यूज करता है तो हमारी जो क्लीवेज डिविजन्स होती हैं वो आती हैं, ओके? चलिए, so when we talk about the gametogenesis process, what is a male gametogenesis known as and what is a female gametogenesis known as? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जल्दी मैं बताऊं, 2021 वाले बच्चे सुपर डुपर लकी थे। हाँ, मैं तुम्हें बताऊं, बोर्ड कैंसिल हो गया जिनका जिंदगी में, वो सुपर डुपर लकी बच्चे होते हैं। तुम इतने लकी नहीं हो। तुम मेहनत करने वाले बच्चों को। वेरी गुड पूजा। The process of male gametogenesis is known as spermatogenesis. The process of female gametogenesis is known as oogenesis. Then what is spermiogenesis? अगर spermatogenesis male gamete formation है तो spermiogenesis क्या है? टिक टिक 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What is spermiogenesis? Anybody? Oogenesis, female gamete formation. Spermatogenesis, male gamete formation. Spermiogenesis, it's the conversion of spermatid to spermatozoa. ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नहीं बोल सकते बेटा, आपको बोलना पड़ेगा कि वो स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ है. ऐसे कुछ भी नाम नहीं दे सकते कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इनटू स्पर्मेटोजोआ आपकी स्पर्मिएशन होती है. नो, इट्स स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ. That formation is known as spermiogenesis. No, Kingsman, you are very much in time, don't worry. Is this thing clear? Another process that we need to know of, जिसके ऊपर बहुत questions बनते हैं, is the process of release of these spermatozoa from the head of the Sertoli cells. The process is known as spermiation. तो ये चार word, spermatogenesis, spermiogenesis, ठीक है, spermiation and oogenesis. They are related to gamete formation. ये आपको आने चाहिए. ठीक है, I repeat again. Oogenesis is the process of formation of female gamete. Spermatogenesis is the process of formation of male gamete. Spermiogenesis is the process of conversion or maturation of spermatid to spermatozoa. Spermiation is the process of release of the mature spermatozoa from the head of the Sertoli cells. Can anybody tell me what is the function of Sertoli cell and what is the other name of Sertoli cells? Two more names of Sertoli cells. Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quickly, quickly, quickly. The Sertoli cells which are present inside the seminiferous tubules, which are the site of sperm formation. They provide nourishment to the developing cells. They are also known as nurse cells. They are also known as dash cells. Starts with the letter S. उनको हम nurse cells बोलते हैं, उनको हम dash cells बोलते हैं. No, they are not called as the germ cells. Very good, Ellie. They are called sustentacular cells. The Sertoli cells are also known as the nurse cells. They are also known as the sustentacular cells. Sustentacular cells. Is this thing clear? And are there any hormones which are released by Sertoli cells? Are there any hormones which are released by the Sertoli cells? Or does any hormone act on Sertoli cells? Yes, very, very important. But your FSH acts on your sustentacular nurse or Sertoli cells. And it is the one which is responsible for nourishment of the male gamete, for the development of the male gamete. And the cell of Sertoli is responsible for secretion of a hormone which is known as inhibin. Do you remember? कभी सुना है इसका नाम? Inhibin, which gives a feedback mechanism कि हमें और development करनी है कि नहीं करनी, हमें और gamete बनाना है कि नहीं बनाना, हमें और testosterone चाहिए कि नहीं चाहिए. ठीक है, किसने बोला एंड्रोजन सिक्रीट करता है Sertoli cell? उसको flying चाटा. Which cells are responsible for secretion of androgens? Testosterone.
कौन सा सेल है जो टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करता है? टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Another hormone which is secreted by Sertoli cells, इनको हम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर एंड्रोजन को कंसंट्रेट करने वाले प्रोटीन्स भी बोलते हैं, ठीक है. एंड FYI, आपके लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं. सर्टोली सेल सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, जो कि आपके एंड्रोजन्स को कंसंट्रेट करते हैं. एंड लेडिक सेल्स आर व्हाट हु आर रिस्पांसिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स. वेयर आर दीस लेडिक सेल्स प्रेजेंट? सर्टोली सेल्स तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं. सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. Where are these Leydig cells present? Tick tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Where are the Leydig cells present? Between the seminiferous tubules, in the interstitial space present between the seminiferous tubule. देखो, let's highlight it. This is one seminiferous tubule, yellow. This is another seminiferous tubule. This is another seminiferous tubule. So the space, the dark pink space, let's shade it blue now, make it purple. This space between the seminiferous tubules act as the interstitial tissue. And this interstitial tissue contains cells which are known as the Leydig cells. These cells, these are the interstitial cells which are none other than the Leydig cells. Leydig cells which are responsible for secretion of testosterone. And under the influence of which hormone does Leydig cells secrete testosterone? Under the hormone LH. जब LH पिट्यूटरी से आता है, Leydig cells पे एक्ट करता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है. And since Leydig cells are also known as interstitial cells, we also call them the interstitial cell stimulating hormone. Hi Aditya, what should I prefer more, mock test or previous year questions? See, I believe previous year questions तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए. अगर अभी तक आपने नहीं किए तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हैं तो उनकी रिवीजन की आपके पास कोई ना कोई फॉल्ट बुक होगी, उसको वैसे रिवाइज करें और मॉक टेस्ट देते रहे. ओके, जिसको भी ये डाउट है कि भैया अब मैं मॉक टेस्ट दूं या प्रीवियस ईयर करूं, तो पहले तो अब तक प्रीवियस ईयर कर लेने चाहिए थे. और अगर अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं किया और कंफ्यूज्ड हो तो पहले प्रीवियस ईयर करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पता लग जाएगा कि मुझे चैप्टर में कौन से वाले टॉपिक को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि रिलेटेड टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है. ऐसा कोई 30 मार्क का अलग से टॉपिक नहीं उठा लेंगे. तो इन द लीस्ट यू विल हैव आइडिया कि ये वाले टॉपिक्स तो मेरे अच्छे से होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट मेरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए. Whether it is genetics, biotechnology, reproduction, ecology, physiology, morphology, सबका आइडिया लग जाएगा. ओके, चले आगे. सबको इतना क्लियर है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं, एंड जर्म सेल्स को सर्टोली सेल्स नहीं बोलते. किनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं? Which cells are also known as germ cells? The germinal epithelium of the testes give rise to which type of cells that are responsible for formation of spermatids? Tick tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कौन से वाले वो सेल्स हैं जो जर्माइनल एपिथेलियम बनाते हैं आपके टेस्टिस का, आपके टेस्टिकुलर फॉलिकल्स का, उन फॉलिकल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का? वेरी गुड. It's the cuboidal epithelium which acts as the germinal epithelium that matures, rather that differentiates itself to form a spermatogonia, and they form multiple spermatogonia forming multiple primary spermatocyte. This process, this phase हम बोलते हैं हर गैमेटोजेनेसिस का, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो 3 फेजेस में होता है, राइट?
और वो 3 फेजेस कौन से होते हैं? आपका मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज. द डायग्राम दैट यू सी हियर बेटा, the phases which they are shown here, आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा मल्टीप्लिकेटिव फेज है, कौन सा ग्रोथ फेज है, कौन सा मैचुरेटिव फेज है. तो जब इस स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बनता है, माइटोसिस हो रही है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, वो आपका मल्टीप्लिकेटिव फेज होता है. जब आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करने लगे, है ना, और अपने आप को डिफरेंशिएट करने लगे इनटू अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, या प्राइमरी oocyte मियोसिस करके बनाने लगे अपने आप को सेकेंडरी oocyte, तब आप समझना कि हाँ ग्रोथ हो रही है, अब सेल धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं. और फिर जब आपके पास एक छोटे छोटे उनके यूनिट्स आ जाए, जैसे कि स्पर्मेटेड, जैसे कि सेकेंडरी oocyte, अब वो मैच्योर होंगे इनटू आइदर स्पर्मेटोजोआ इन केस ऑफ मेल्स और ovum in case of females. That's maturation phase. So these phases you should know, mitosis, meiosis and maturation या differentiation are also known as multiplicative phase, growth phase and maturation phase. ठीक है, so this is known as the multiplicative phase. This is known as your growth phase, and this finally is known as your maturation phase. तो बहुत क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ माइटोसिस कब होगी? जब स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी oocyte बनाएगा, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बनाएगा, या स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ बनाएगा. तो इन विच कंडीशन आर यू गोइंग टू सी माइटोसिस? आंसर माय क्वेश्चन. आई रिपीट द ऑप्शंस. जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका फॉर्म होगा फ्रॉम प्राइमरी, या जब आपका स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा. टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जब ही स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, तब आपका माइटोसिस एज अ सेल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, जब पहले सीक्वेंस बोली थी तो ए था, जब बाद में सीक्वेंस बोली थी तो सी था. डी कभी भी आंसर नहीं था पूजा. इट इज दैट यू शुड नो कि जब भी स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी oocyte बनाता है, तभी. 3 ही ऑप्शन दिए थे, चौथी ऑप्शन तो दी नहीं. पहला था स्पर्मेटोजोआ का बनना, दूसरा था सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का बनना, और पहला था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का बनना. तो डी तो कभी ऑप्शन थी नहीं. एनीवेज, बात समझ में आती है. फेजेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस. Cells of male reproductive system which are responsible for secretion of testosterone, cells which are responsible for secretion of inhibin and आपके androgen binding protein, cells which are responsible for nourishment. Where are these cells present? In the testes, in the seminiferous tubules, or outside the seminiferous tubule between the interstitial of different seminiferous tubules. How many seminiferous tubules do you find in one testicular follicle? How many seminiferous tubules you find in one testicular follicle? Tick tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने फॉलिकल्स आपको एक टेस्टिस में देखने को मिलते हैं? जल्दी से बता दो. और अगर दोनों के लिए पूछ लिया जाए, टोटल हाउ मेनी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन मेल बॉडी, तो आपको दोनों टेस्टिस के बताने होंगे. In each testes you have about 250 testicular follicles, है ना? 200 to 250 testicular follicles, right? And in each follicle, or आप कह सकते हो in each section, you have about 2 to 3 or 1 to 3 seminiferous tubules. These are coiled tube-like structures. फटाफट से one by one आप मुझे बताओ. These seminiferous tubules of each follicle, they exit the follicle in the form of a tube-like structure called tubuli recti. What do these tubuli recti form next?
a network of tubules which you see inside the testes, उसको हम इंट्राटेस्टिकुलर ट्यूबुलर नेटवर्क बोलते हैं, राइट? तो ये इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम जो है उसमें आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपके क्या बनाते हैं? Tubuli recti, and tubuli recti form dash. What do they form? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Structure of testes कि हर follicle से जब seminiferous tubule बाहर निकलती है in the form of tubuli recti, then it joins to form a network of ducts known as rete testes. And these rete testes gives out few branches of a duct that join to form the coiled tube-like structure called epididymis. What are the ducts that come out of rete testes and join to form epididymis? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Vasa efferentia. And what do these epididymis parts join to form or exit the testicular sac or scrotum as? Seminiferous tubules से बना रेटे टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया से एपिडाइडमस, एंड एपिडाइडमस से वास deferens. Epididymis से vas deferens that enters the abdominal cavity via inguinal canal. ये vas deferens moves upwards and through inguinal canal reaches the abdominal cavity, and ये vas deferens travels into the abdominal cavity. If you can see, can you appreciate that this is in a कवरिंग, एंड ये अकेली ट्रैवल नहीं करते हैं, इसके साथ आपके साथ इंग्वाइनल एक तरीके की आर्टरी भी होती है, वेन भी होती है, लिम्फेटिक भी होता है, आपके पास एक टेंडन भी होता है, आपके पास एक नर्व भी होती है, सब कुछ एक साथ ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ अ बंडल, एंड दिस बंडल इज नोन एज द स्पर्मेटिक कॉर्ड. ये आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो अब्डोमेन में एंटर करती है और ये सारे डक्ट्स और वेसल्स को बांध कर रखती है. दिस seminal vesicle when enters the abdominal cavity, it joins with the ducts of the male reproductive glands, the accessory reproductive glands, which are responsible for secretion of the male seminal fluid which provides a medium for transport of sperms, right? तो हमारे पास 3 accessory male reproductive glands हैं. Can you name the 3 accessory male reproductive glands? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The seminal vesicles, the prostate, and the bulbourethral gland. Which amongst them have a basic secretion that neutralizes female reproductive tract acidity? इनमें से कौन सी ऐसी है जिसकी secretion basic है और female reproductive tract की acidity को neutralize करती है? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's none other than the basic secreting gland, which is also known as the Cowper's gland, which neutralizes the acidity of the female reproductive tract and is also responsible for lubrication, for insemination. See, prostate is known for being unpaired and containing certain nourishing substances that are very important for the maturity of the sperm. The prostaglandins, the calcium, they are very responsible. Seminal vesicle forms 60% of the seminal fluid, rich in fructose. The only fruit sugar which is present in human body is only in the male seminal fluid, otherwise it is not present. जो लाइनें यहाँ पे लिखी हैं
आपकी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के लिए, उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आते हैं। That who forms the majority of the seminal fluid, the seminal vesicles. ठीक है, मैंने स्पेशली बोला था कि कौन न्यूट्रलाइजेशन के लिए होता है, काउपर्स लुब्रिकेशन के लिए होता है, प्लस हम ये भी बोलते हैं कि इट इज द वन व्हिच इज सिक्रीटेड एट द साइट of insemination and it is responsible for even neutralizing the acidity of the reproductive tract. These secretions or seminal plasma is rich in fructose, calcium and enzymes. तो आपका जो कैल्शियम है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, वो प्रोस्टेट के है, तो चूज करने को आए बिटवीन प्रोस्टेट एंड कॉर्पस, यू विल चूज कॉर्पस मोर एप्रोप्रिएट. क्लियर? याद रहेगा? अच्छा, अगर एनालॉगस स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए, जैसे बोलते हैं द enlarged end of the penis called the glans penis is covered by a loose fold of skin called the foreskin. It is analogous to which structure of the female reproductive organ? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ellie, weightage wise, if we look at the previous year questions, every year there is a slight change. As the pattern noticed from last few years, what has been estimated is that genetics and biotechnology, moreover biotechnology has taken an edge over other chapters. थोड़ा सा उसका वेटेज बढ़ गया है. हाँ, आपके जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर के कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं, है ना. अदरवाइज ऑन एन एवरेज आपको हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं. यूनिट वाइज आप कह सकते हो कि हाँ, सेल यूनिट होने को बहुत सिंपल है, बट उसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल साइकिल इज एसोसिएटेड विद जेनेटिक्स आल्सो, सेल साइकिल इज एसोसिएटेड विद योर biotechnology also, so link करके question भी आ जाते हैं. Cell cycle is also associated with your reproduction also. So since it's a very dynamic chapter, it includes a lot of topics and many questions are shared from it. आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस इज आल्सो रिलेटेड टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो काफी क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड आ जाते हैं. सो मैक्सिमम जो देखा गया है पैटर्न इन द लास्ट 3 इयर्स, दैट कोई भी इंडिविजुअल क्वेश्चन एक चैप्टर का डेजिग्नेटेड नहीं आता. इफ यू हैव मोर देन 3 क्वेश्चंस पर चैप्टर, the level of the question is either it's a multiple statement question or it is an interlinked question which includes 2 to 3 chapters together and you have to find out the right answer. Either it's a match of the column or it has options from which you have to choose how many are right, how many are wrong, or it has a table form which you have to fill in where 2-3 things are related to each other. तो आपको ऑन एन एवरेज हर चैप्टर इक्वली तैयार करना है. जिस यूनिट में आपके पास ज्यादा चैप्टर है, डेफिनेटली उसकी वेटेज भी ज्यादा होगी. ठीक है? I buy the answer that the analogous structure, the one which covers the end of the penis माने pineal meatus, जो opening को cover करे वो foreskin है. वैसे ही फीमेल ओपनिंग जो वजाइना को कवर करता है इमीडिएटली, वो आपका लेबिया माइनोरा होता है. सो इसीलिए इट इज एनालॉगस टू लेबिया माइनोरा. देखो, असर्शन रीजन मैक्सिमम 2 आएंगे. लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू. मैक्सिमम 2 असर्शन रीजन आएंगे, उससे ज्यादा असर्शन रीजन के क्वेश्चन आने ही नहीं वाले. ठीक है? एंड एक आपके पास ऑप्शन होगी कि आपको अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है. सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे, आपको 10 ही अटेम्प्ट करने. सो इट्स वेरी इजी. इतना तो कोई मुश्किल नहीं है. एक क्वेश्चन तो हम हर बार तुम्हें 2-3 असर्शन रीजन क्वेश्चन यूआईटीएस में देते हैं कि एटलीस्ट तुम्हें आइडिया लगे कि कभी तुम्हें ये समझ में आए कि कब हमारी ऑप्शन सही है, कब गलत है ना. ओके, लास्ट एंड फाइनल विद रिस्पेक्ट टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हमें डक्ट सिस्टम पढ़ लिया,
हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया, हमने गैमीट के बारे में पढ़ लिया, हमने हार्मोन रेगुलेशन के बारे में पढ़ लिया कि LH लेडिक सेल्स पे काम करता है, लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, FSH सर्टोली पे काम करता है, सर्टोली इनहिबिन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स बनाते हैं, फीडबैक इनहिबिशन करते हैं फॉर रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. You tell me which male reproductive organ is responsible for a common passage for both sperm and urine. Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जल्दी से बता दो. बड़ा कॉमन क्वेश्चन है पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. It's the urethra, which forms the common passage for both sperm and urine. The urethra is the longest duct of the male reproductive system, which exits from the urinary bladder, joins with prostate and bulbourethral. ठीक है, तो बल्बोयूरेथ्रल अपनी ओपनिंग्स या अपनी डक्ट्स कहाँ ओपन करता है? यूरेथ्रा में. प्रोस्टेट अपनी डक्ट्स कहाँ ओपन करता है? यूरेथ्रा में. सेमाइनल वेसिकल अपनी डक्ट्स किसके साथ ज्वाइन करता है? प्रोस्टेट यूरेथ्रा से ज्वाइन कर रहा है, बल्बोयूरेथ्रल यूरेथ्रा से ज्वाइन कर रहा है. सेमाइनल वेसिकल किससे ज्वाइन करता है? टिक टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जल्दी बताओ, छेती छेती छेती. शलाका, देवशीष, हम ये मीटिंग बाद में भी कर सकते हैं ना? नगमा, हमने थोड़े दिन पहले ही ह्यूमन फिजियोलॉजी सारी रिवाइज करी है, जस्ट अ वीक बिफोर दिस. Very well done. The seminal vesicle ducts join with vas deferens to form dash. Which duct is formed by the joining of vas deferens and seminal vesicle? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seminal vesicle और vas deferens जुड़ के कौन सी डक्ट बनाते हैं? Seminal vesicle duct plus vas deferens form the dash duct. ये सारे क्वेश्चंस हैं जो PYQ के फॉर्म में आ सकते हैं. They form the ejaculatory duct. What do they form? They form the Any doubt with respect to the male reproductive system? Male reproductive glands, cells, 10. I hope it's okay now. कौन सा ऐसा मेल स्पर्म स्ट्रक्चर है अभी बहुत अच्छा वाला आ रहा है? Which structure of the male sperm is responsible for secretion of the sperm license? And name the sperm license. Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect answer, honeybee. Acrosome is the one which is responsible for secretion of the sperm license. And sperm license are typically 3 enzymes which are responsible for digesting the egg membranes for fertilization. The 3 sperm license which are secreted by acrosome are namely, can anybody tell me? Hyaluronidase, very good. And zona license and
corona penetrating enzymes. Wonderful. So these are 3 sperm lysin or the enzymes which are secreted by the sperm for digesting the egg membranes via acrosome. All these enzymes are packaged by acrosome. That means acrosome is made up of which cell organelle? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन्स बनाता है एंड फिर इन प्रोटीन्स को भेज देता है किसके पास फॉर पैकेजिंग एंड सिक्रीशन? Golgi body. So acrosome is nothing but an aggregation of Golgi which is responsible for packaging of these proteinaceous enzymes. ठीक है, and secretion of these proteinaceous enzymes. So it's not a lysosome. ठीक है, these enzyme containing structure is a secretory vesicle and the secretory body of the cell is Golgi body. जैसे एक मेल गैमीट में स्पर्म में गोल्जी एक्रोसोम बनाता है, वैसे ही फीमेल गैमीट में गोल्जी एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हमारे ह्यूमन एग में नहीं होता, बट बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है जिनके एग में गोल्जी एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसके प्रोसेस को हम विटेलोजेनेसिस बोलते हैं. टिक टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Is responsible for the yolk formation, and this yolk formation is known as vitellogenesis. Star question mark. जैसे गोल्जी मेल्स के अंदर एक्रोसोम बनाकर स्पर्म लाइसिन सिक्रीट करने की हेल्प करता है, वैसे ही फीमेल गैमीट के अंदर योक फॉर्मेशन करना, विटेलोजेनेसिस करना, ये सब गोल्जी का ही काम होता है. बात समझ में आती है? The head of the sperm contains acrosome and a nucleus which is a tubular elongated nucleus containing chromosomal material. The neck contains a structure called dash. What is this structure called? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's the proximal centriole which is lacking in the female gamete. Female gametes के पास centriole नहीं होता, तभी वो cleavage divisions खुद से नहीं करते, उनको male gamete की जरूरत पड़ती है क्योंकि male gamete के पास centriole होता है. Star question mark. Neck region में ये जो centriole है, इसकी क्या significance है कि at the time of fusion, fertilization, this centriole contributes in the cleavage divisions because female gamete के पास centriole नहीं होता. Star question mark. Female gametes lack centriole. Female gametes lack centriole. बेटा corona penetrating enzymes. ठीक है, middle piece contains the mitochondria which is the energy source which is a spirally coiled mitochondria, and the tail region of the sperm contains a microtubular filament. हम बोलते हैं कि वो एक contractile structure है जो कि microtubules का बना हुआ है जिसको हम filament बोलते हैं, which is responsible for the movement of the sperm. It is not flagella. वो एक टेल पोर्शन ऑफ द स्पर्म है जिसके अंदर आपका एक फिलामेंट है, एंड आपके सेल के अंदर ये जितने भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, चाहे वो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, दे आर ऑल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डैश. किस स्ट्रक्चर से ये सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स अराइज करते हैं?
आपके स्पिंडल फाइबर्स अराइज करते हैं। टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा स्ट्रक्चर है वो सेल का? सेल स्ट्रक्चर which give rise to these microtubules. These microtubules which organize themselves in the form of filaments. जैसे मसल के अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं कि एक्टिन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, मायोसिन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, एंड दे ऑर्गेनाइज देम्स टू फॉर्म मायोफिलामेंट्स। इनके ट्यूब्यूल्स जुड़कर मायोफिलामेंट्स बनाते हैं। वैसे ही आपके स्पर्म की टेल में कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो जुड़कर एक फिलामेंट बनाते हैं, that is responsible for motility of the sperm. Wonderful. It originates from centriole. पूजा please correct yourself. Centrosome भी बोल सकते हो, centriole भी बोल सकते हो कि centriole वो structure है। You know, centriole is that structure, and this one is the distal centriole. Distal centriole which give rise to the filament. Filament that is present in the tail of the sperm, and एक छोटा सा portion of the filament होता है which is not covered by, जिसको हम end बोलते हैं कि मेरा filament end है जो कि not covered by cell membrane है, plasma membrane है, क्योंकि एक एनिमल सेल है, एक मेल गैमीट है, ह्यूमन मेल गैमीट है, तो इसके पास सेल वॉल नहीं होती। Which type of proteins are present on the surface of the male gamete that interact with the female gamete at the time of fertilization? Tick tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन से प्रोटीन्स हैं जो आपके स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि ये मेल गैमीट है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। द मेल एंड द फीमेल गैमीट हैव एन आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन कि ह्यूमन गैमीट है कोई और है। हाउ डू दे आइडेंटिफाई? विद द हेल्प ऑफ सरफेस प्रोटीन्स। व्हिच सरफेस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ मेल्स? मैंने हमेशा बताया तुमको कि लेडीज आर ऑलवेज राइट। एंटी अगर होते हैं तो कौन होते हैं? मेन। तो इसमें मेन के पास, मेल गैमीट के पास कौन सा वाला प्रोटीन होगा? एंटी फर्टिलाइजिंग। एंटी फेमिनिस्ट कौन है? मेन। तो एंटी फर्टिलाइजिंग कौन होंगे? मेन। मेल गैमीट। फर्टिलाइजिंग इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन egg membrane. Females are always right. Okay, याद रहेगा? कैडेट किशन, गॉडेस माताजी, रजत, प्रिया, which hormone, which protein is present at the surface of the male gametes? Not fertilizing, it's anti-fertilizing. Moving to now female. अभी हमने मेल गैमीटोजेनेसिस कर दिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया, मेल गैमीट फॉर्मेशन भी कर ली, मेल गैमीट भी पढ़ लिया, हार्मोन रेगुलेशन भी पढ़ ली। लुकिंग एट द फीमेल गैमीट, हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं दैट फीमेल गैमीटोजेनेसिस इज कॉल्ड oogenesis. It starts during the embryonic life. It gets arrested in the embryonic life in the primary follicle stage, primary oocyte in the meiosis 1, prophase 1 diakinesis. It starts with its development of completing the meiosis at puberty, which is under the influence of pituitary hormones FSH and LH, and the onset of the sexual maturity is known as the onset of the menstrual cycle, which is called menarche, at the puberty, which leads to the complete maturation of the female gamete, arrested at the last stage, which completes after the entry of sperm. अगर sperm नहीं आता है तो वो हमारा जो oocyte है अपनी डेवलपमेंट पूरी नहीं करता, तो वो किस स्टेज में अटका होता है? देखो, बर्थ के टाइम पे वो अटका होता है प्रोफेज 1 में। फिर oocyte आपका, प्राइमरी oocyte अपना प्रोफेज 1 कंप्लीट कर लेता है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, मियोसिस 2 में आ जाता है, सेकेंडरी oocyte में आ जाता है। सेकेंडरी oocyte में अपना डिवीजन करना शुरू कर देता है, बट उसकी डिवीजन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होती। तो वो किस स्टेज में अटका होता है?
टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 perfect answer. It is arrested in metaphase 2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि फीटल लाइफ में प्राइमरी oocyte किस स्टेज में अरेस्टेड है? मियोसिस 1, प्रोफेज 1, डायाकाइनेसिस. एंड लाइकवाइज आपका जो सेकेंडरी oocyte है, it develops into ovum after the entry of sperm. अगर स्पर्म एंटर नहीं करेगा तो ये अपनी कंप्लीट मैचुरेशन शो नहीं करेगा, राइट? एंड दिस सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, meiosis 2, metaphase 2 until the sperm entry. आप कह सकते हो क्लियर है? चले आगे. पक्का 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 कि फीमेल गैमेटोजेनेसिस आपका अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ hypothalamic pituitary hormones, and they are responsible for the maturation of these oocytes which are present inside the follicles. Primary oocyte primary follicle में होता है, secondary oocyte secondary follicle में होता है, and the matured secondary follicle is known as dash. What is the most matured secondary follicle known as? Tick tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जो सबसे ज्यादा मच्योर सेकेंडरी फॉलिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जिसमें कैविटी भी होती है, जिसको हम सिस्ट भी बोलते हैं, कि वो एक सिस्टिक टाइप का है, उसके अंदर कैविटी है, कैविटी के अंदर आपका जो एग है वो एक डिस्क से अटैच्ड होता है, उस कैविटी के अंदर फ्लूइड भी होता है, उस फ्लूइड को हम एंट्रल फ्लूइड बोलते हैं, उस कैविटी को हम एंट्रम बोलते हैं, और उस मच्योर्ड फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं. वेरी गुड. उस मच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं. एंड ऑल दीज फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, दे आर ऑल प्रेजेंट इन द डैश पोर्शन ऑफ द ओवरी. ये सब ओवरी के अंदर है. ओवरी के अंदर ही तो ओवम डेवलप करता है ना. तो ओवरी में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये सारे के सारे फॉलिकल्स? आर दे प्रेजेंट इन द लाइनिंग? They're present in the cortex, they're present in the medulla, or none of these? Fallopian tube में होते हैं. Tick tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good evening अर्शद. थोड़ी ज्यादा लेट हो गए आज आप. Wrong 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 wrong. बेटा मेडुला रीजन ये होता है. The innermost portion of the ovary is called medulla. यहाँ पे तुम्हें कोई फॉलिकल नजर आ रहा है? तुम्हें इस मेडुला में कोई फॉलिकल नजर आ रहा है? This is medulla. Medulla has connective tissue and blood vessels. What does medulla have? Medulla has connective tissue and blood vessels. All the follicles are present in the cortex region. ये ओवरी है, ये ओवरी का मेडुला है. ये जितना कॉर्टिकल पोर्शन है ओवरी का, the cortex of the ovary has all the follicles in different maturating states. ठीक है? The medulla contains the connective tissue and the blood vessels. The cortical portion of the ovary has all the follicles in maturating state. आप देखो बिल्कुल एग से ये कॉर्पस लूटियम लाइनिंग के पास, रिलीज ऑफ ओवम लाइनिंग के पास, अगर वो बीच में छुप के बैठेंगे फॉलिकल्स, तो रिलीज होने के बाद उनको बहुत लंबा रास्ता नहीं चल के जाना पड़ेगा फेलोपियन ट्यूब तक. वो बार बार ही होते हैं कि जब ग्राफीन फॉलिकल मैच्योर हो जाए और अंडा फटे और वो बाहर निकले तो बिल्कुल बाहर
एज पर ही हो कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में कि बाहर से बाहर निकल जाए, होता नहीं है घर में। आई हैड अ ह्यूज फाइट व्हेन आई वाज इन माय टीन्स एंड आई वाज इन माय कॉलेज। तो हमारे घर का क्या था कि सारे कमरे अंदर अंदर थे, एक ही कमरा था जो बाहर वाला कमरा था, जिसका दरवाजा भी बाहर ही खुलता था कि अगर रात को बाहर चले जाओ तो किसी को पता भी ना लगे। मेरा इतना झगड़ा हुआ घर में कि मुझे तो यही वाला कमरा चाहिए जिसका दरवाजा बाहर खुलता है, और मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया कि हमारे घर में लड़की जब तक शादी नहीं होती हम उसको बाहर वाला कमरा नहीं देते, अच्छा नहीं होता। मुझे तो यही वाला कमरा चाहिए कि बाहर के बाहर निकल कर आपको पता भी ना लगे। So it's the same case that all the follicles are present in the cortical region, and this cortex has follicles in different maturating states. आप देख सकते हो ये प्राइमरी फॉलिकल है, जब उसके फॉलिकल की साइज बहुत बढ़ गई, नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स बहुत बढ़ गए, तो वो सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। फिर जब वो उसके अंदर कैविटी आ गई, वो फ्लूइड फिल्ड हो गया, तो वो टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। So primary, secondary, tertiary, Grapheene, these are all different stages which are present in the cortex, घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में। And believe you me, बिल्कुल जन्नत होता है वो कमरा। कभी तुम्हारा रात को 2 बजे मैगी खाने का मन करे, दरवाजा खोला, बाहर गए, स्कूटी उठाई, मैगी खाई, वापस आ गए, बंद कर दिया, किसी को कुछ नहीं पता लगता। And me and my brother really used to have lot of fun. मम्मी पापा का कमरा बिल्कुल अंदर वाला था, मास्टर बेडरूम है ना, सबसे कोने में उस घर के। हमारा कमरा था बिल्कुल दूसरा कोने में उस घर के। तो जब कभी कभी रात को हम लोग बैठे होते थे, भाई मैगी खाने का मन करे बहुत जबरदस्त, चल लेकर आते हैं। तो वेरी फन। ऑलराइट, मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया रात को घर से बाहर कैसे निकलते हैं। मैं तुम्हें ये सिखाऊंगी कि ओवम कैसे ग्राफीन फॉलिकल से बाहर निकलते हैं। तो कौन बताएगा मुझे कि which hormone is responsible for release of ovum from the graphene follicle? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और एक जफा अभी बताती हूँ। बहुत ज्यादा, पर पापा को कभी पता नहीं। देखो चोरी करो ऐसे ही जो कभी पकड़ी ना जाए। LH hormone. The process of release of ovum from the graphene follicle is known as ovulation, and ovulation occurs under the influence of which hormone? LH hormone. Clear? And this hormone with FSH and estrogen show a peak at the time of ovulation. हम फरीदाबादी हैं, फ्रॉडाबादी बोलते हैं हम लोग। My parents' place is in Faridabad, Haryana. NCR, Delhi NCR. Okay, let's draw the structure of graphene follicle. Jafar, this one is for you. That this is your ovum, उसका न्यूक्लियस है, उसका विटेलाइन मेम्ब्रेन है, उसके पास एक जोना पेलुसिडा है, और जोना पेलुसिडा से पहले पेरी या प्री विटेलाइन स्पेस है. Let's mark that as a white space कि ये मेरे पास एक प्री विटेलाइन स्पेस है, जोना पेलुसिडा है, ये हमारी जोना पेलुसिडा है, which is a non-cellular layer, and हमारे पास एक कोरोना रेडिएटा है. So this is the structure of the mature ovum. The black is the corona radiata, the yellow is the zona pellucida. The white space after the red line is the pre-vitelline space, and the red line is the vitelline membrane or the membrane of the egg. This is the structure of an egg which is present inside the graphene follicle, attached to the graphene follicle with the help of a disc-like structure. कुछ cells होते हैं जो एक डिस्क सी बनाते हैं, उस डिस्क को हम डिस्कस प्रोलीजेरस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिस्कस प्रोलीजेरस. And these discs attach the ovum to the lining of the graphene follicle. एक inner lining of the graphene follicle होती है, एक outer lining होती है. ये inner lining बना लो, और ये cells हैं जो inner lining बना रहे हैं. एक दो लेयर में होते हैं, मैं एक ही लेयर बना रही हूँ. इसको हम थीका इंटरना बोलते हैं. क्या बोलते हैं? थीका इंटरना. ठीक है, you can make it a little double layout.
देन इसके बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना. This is theca externa, and this Graphene follicle is a fluid-filled follicle, and the fluid which is present inside is known as antral fluid or the liquor folliculi. उसको antral fluid भी बोलते हैं, उसको liquor folliculi भी बोलते हैं. एंड बेटा ये जो सेल्स आपकी कोरोना रेडिएटा बना रहे हैं इनको हम ग्रैन्युलोसा सेल्स बोलते हैं. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल. अगर किसी को नहीं पता, फॉर योर इंफॉर्मेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, mature follicle that releases the egg, has a theca externa, a theca interna, liquor folliculi, ovum with all its layer. याद रहेगा. चले आगे. तो हमें मालूम है कि हमारे पास रिलीज ऑफ ओवम होता है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, एंड देन द ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू अ येलो कलर बॉडी व्हिच इज नोन एज LH आता है. ग्राफियन फॉलिकल ओवम रिलीज करता है और ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH इनटू अ येलो कलर्ड बॉडी नोन एज टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It's known as corpus luteum, which is responsible for secretion of progesterone hormone. And the acellular layer of the ovum is none other than this layer, which is the acellular layer, zona pellucida. इसमें कोई सेल नहीं होता. जोना पेलुसिडा में कोई सेल नहीं होता. इट्स द acellular layer. ठीक है. And whenever the corpus luteum breaks, releasing the egg with all these layers, zona pellucida, corona radiata, it converts into a yellow colored body called corpus luteum that secretes progesterone. And ये corpus luteum को कौन सा hormone maintain करके रखता है? Which hormone is responsible for formation and maintenance of corpus luteum? कब बनेगा कॉर्पस लूटियम, कब तक रहेगा कॉर्पस लूटियम, कब तक बनाता रहेगा प्रोजेस्टेरॉन, ये किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है? टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जल्दी 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 बताओ. Which hormone is responsible for formation and maintenance of corpus luteum? बेटा none other than LH hormone. LH ही ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ के कॉर्पस लूटियम बनाता है. LH ही कॉर्पस लूटियम को कॉर्पस लूटियम रखता है. तभी वो लूटिनाइजिंग हार्मोन है और इस बॉडी का नाम कॉर्पस लूटियम है. और तभी वो फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें कॉर्पस लूटियम होता है, जिसमें लूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उसको हम लूटियल फेज बोलते हैं या फिर सिक्रीटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. Can anybody tell me what is the number of days or the time period of the luteal phase of menstrual cycle? Tick tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये सिक्रीटरी फेज, ये लुटियल फेज का क्या टाइम पीरियड होता है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में? It has a fixed time period of dash number of days. Wonderful, Pooja. It has a fixed time period of 14 days. It has a fixed time period of 14 days, warrior. And ovulation occurs just 1 day before the luteal phase. हम ये नहीं बोलते कि follicular phase के बाद ओव्यूलेशन होती है. हम बोलते हैं कि लूटियल फेज शुरू होने से जस्ट एक दिन पहले ओव्यूलेशन होती है, बिकॉज ये ऐसा पीरियड है जो कि फिक्स्ड टाइम पीरियड है. इट इज अ फिक्स्ड टाइम पीरियड ऑफ अबाउट 14 days and the ovulation occurs just 1 day before 14 days. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 days की है तो हम बोलते हैं ओव्यूलेशन कब होगी? तो जब आपका लास्ट फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट फेज खत्म होता है
या उतने टाइम पीरियड का होता है, इससे एक दिन पहले। तो 28 डेज में से 14 डेज निकाल दो उससे एक दिन पहले, तो हम क्या बोलेंगे 28 माइनस 14, 14। तो ओव्यूलेशन विल अकर ऑन द 14th डे। लाइकवाइज अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 42 डेज की है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 42 डेज की है, तो फिर ओव्यूलेशन किस दिन पर होगी? आंसर 26, 27, 28, 29। टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। If the time period of the menstrual cycle is 42 days, then the ovulation will occur at which day? 26, 27, 28, 29. Minus 42 minus 14 जो आंसर आए 28th डे पे होगी। Is this thing understood? Very, very important to understand that your menstrual cycle is basically the events which happen in ovary and uterus, the events which happen in the body of a sexually mature female, the events which happen in the body of a sexually mature female which are repetitive, which repeat after a fixed time period of on an average in a ideal reproductive female of 28 days. And these events signify changes in ovary and uterus that are under the influence of hormones. Ovary under the influence of pituitary hormones, uterus under the influence of ovarian hormones. पिट्यूटरी जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो ओवरी पे जाकर एक्ट करते हैं, फिर ओवरी कुछ हार्मोन्स बनाते हैं वो जाके यूट्रस पे एक्ट करते हैं, एंड ये सारे हार्मोन्स वाया ब्लड पहुंचते हैं टू ऑल दीज ऑर्गन्स एंड दे एक्ट बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद द रिसेप्टर on the surface membrane or intracellular receptor. Tick tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नगमा देन दैट डिपेंड्स अपॉन दी ऑप्शंस की क्या है। हमने एक फिक्स डेट दी थी तो उसके हिसाब से हमने आंसर पूछा। हाँ जी, किस तरीके के रिसेप्टर बनाते हैं ये, जल्दी बताओ। द ओवेरियन हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, they form intracellular receptor. FYI, FSH and LH, the pituitarian hormones, they form receptor bound सरफेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। दोनों का अलग मैकेनिज्म है क्योंकि FSH LH प्रोटीन बेस्ड है, लाइक इंसुलिन ग्लूकागॉन। दे फॉर्म सरफेस रिसेप्टर्स एंड दे जनरेट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाय सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, ओवरी वाले स्टेरॉइड बेस्ड है, वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स बनाते हैं। पिट्यूटरी वाले प्रोटीन बेस्ड है, मैंने तुम्हें बोला था प्रोटीन के 4 याद रखना, FSH LH इंसुलिन ग्लूकागॉन, याद रहेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Another very important question which comes from menstrual cycle is the graph. ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि कब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा हार्मोन ज्यादा है और कब कम है। आपको दो चीजें याद रखनी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो दो तरीके के हार्मोन्स है, पिट्यूटरी हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन्स, उसमें से एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स ऐसा है जिसमें एक हार्मोन तो पहले 14 दिन तक होता ही नहीं है, आपका ओवेरियन हार्मोन्स में प्रोजेस्टेरॉन फर्स्ट 14 डेज होता ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट 14 डेज कॉर्पस लूटियम बनता ही नहीं है और जब तक कॉर्पस लूटियम नहीं होगा प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा। सो वन की वे टू आइडेंटिफाई कि ये पिट्यूटेरियन हार्मोन्स है क्या ये ओवेरियन हार्मोन्स है, इज सिंपल, प्रोजेस्टेरॉन पहले 14 दिन होता ही नहीं है। तो जो फर्स्ट 14 डेज आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आए तो समझ जाओ कि ये कौन से हार्मोन्स है, ये आपके ओवेरियन हार्मोन्स है। ओके, लेट मी शो यू। एक अनलेबल्ड डायग्राम अपन उठाते हैं, ठीक है, और उसमें से फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा है। ओके, लेट मी शो यू एन इमेज, फिर तुम मुझे बताना। बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। कैन यू अप्रिशिएट? पहले 14 दिन तक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
क्या तुम्हें पहले 14 दिन कोई लाइन नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन? नहीं आ रही। इसका मतलब पहले 14 दिन जो हार्मोन है वो बढ़ भी रहे हैं, वो घट भी रहे हैं। इसका मतलब ये ओवेरियन हार्मोन्स तो नहीं है, ये पिट्यूटेरियन हार्मोन्स है। पिट्यूटेरियन हार्मोन्स दो ही है, एक एफएसएच और एलएच। अब इसमें से एफएसएच एलएच कौन सा होगा? जो बहुत ज्यादा हाई पीक शो करता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, वो एलएच है। जो बहुत ज्यादा पीक शो कर रहा है, माने जो यहाँ पे है, एंड ये कौन है? ये आपका एक्स है। तो एक्स इज एलएच, वाई इज एफएसएच। सिंपल वे टू आइडेंटिफाई whether it is going to be a pituitary hormone or it is going to be an ovarian hormone. Will you be able to do it if a graph comes which is an unlabeled graph? Shall we take another one? अच्छा देखो ये वाला देखो, अभी इसमें ना सारे प्रेजेंट है ए बी सी डी के नाम से। अब आइडेंटिफाई करो ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, डी कौन है। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो डी कौन है। टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। quickly. Which is A, which is B, which is C, which is D? अब जब एक से ज्यादा हार्मोन आ जाए फिर कंफ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले मार्क डी, ठीक है। वन हार्मोन which shows two peaks, one hormone which shows two peaks, the B hormone, can you see one peak and then two peak? It is none other than estrogen. तो B हार्मोन क्या है तुम्हारा? ईस्ट्रोजन। जो दो पीक दिखाए वो ईस्ट्रोजन हार्मोन। CLH हार्मोन, ए कौन सा वाला है? कोई लाइन मिक्स हो गई, ओवरलैप हो गई, ठीक है, याद रहेगा पक्का? Clear about menstrual cycle? We have menstrual phase that begins 1 to 4 days. We have follicular phase or proliferative phase in which the uterine lining thickens under the influence of estrogen. Then we have the luteal phase, which is the last phase in which the uterus lining thickens even more. There blood vessel formation, there is gland formation. The influence of both estrogen and progesterone. तो दो पीक वाला हार्मोन एक ही है, कौन सा? ईस्ट्रोजन। जब ओव्यूलेशन होती है तो क्या स्टेटेड होता है? एफएसएच भी हाई, एलएच भी हाई, ईस्ट्रोजन भी हाई, सारे हाई होते हैं, ठीक है। All right, moving forward. So we have done female gametogenesis. We have done hormone regulation of female gametogenesis, menstrual cycle. Let's talk about a little of female reproductive system. The uterus, the vagina, the fallopian tube, the mammary glands and the external genitalia. Okay. सबसे पहले बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव कोर सिस्टम की। ओवरी की हमने बात कर दी, ओवरी का कॉर्टेक्स, ओवरी का मेडुला। लेट्स टॉक अबाउट द fallopian tube. हम बोलते हैं fallopian tube epithelial lining is dash in nature. Tick tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. What is the nature of the lining of the fallopian tube? Since it's the tube which is responsible for the transfer of female gametes to the site of fertilization, it's the tube where the male gametes reach after insemination for fertilization. It's the site of fertilization at the junction of ampulla and isthmus. अगर किसी एक को चूज करना हो ampulla और isthmus से, तो हम ampullary region को site of fertilization बोलते हैं. It has ciliated epithelium. Very good. ठीक है. The portion of the oviduct or the fallopian tube which receives the eggs or the ovum from the ovary is dash. कौन सा part egg को receive करता है from the ovary? Is it the infundibulum? Is it the isthmus? Is it the ampulla? Is it the uterine part? Tick tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Which part of the fallopian tube is responsible for receiving the egg post ovulation? Jaldi batao. It's the infundibulum whose end has finger-like projections called fimbriae. End of infundibulum has finger-like projections called fimbriae, which receive. Which part of the uterus continues into a muscular tube-like organ called vagina? यूट्रस का कौन सा पार्ट वजाइना में कंटिन्यू करता है? आपको पता है यूट्रस में एक फंडस है, एक बॉडी है और एक नैरो पार्ट है which is known as the narrow lower part that continues into the muscular tube like structure called vagina that acts as the copulatory organ for females. Very good. The lowermost narrow portion of uterus, which is known as cervix or the cervical region, is one which continues into vagina. The vaginal canal and the cervical canal together form the passage of the exit of the newborn and is also known as the birth canal. And this birthing process of the release of the fully developed fetus from the birth canal is initiated. The birthing process is called parturition, and this parturition is initiated by a dash reflex. Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वो कौन सा रिफ्लेक्स है? वो कौन इनिशिएट करता है? उसका मेन मास्टरमाइंड हार्मोन क्या है? Very good. We call it the fetal ejection reflex, which is initiated by the fully developed fetus and placenta. And the key functional hormone is oxytocin, which is responsible for vigorous uterine contractions. Where does these contractions occur? In the muscle. Where is the muscle present in a uterus? Uterus की 3 linings है. Innermost, middle, outermost. In which layer do you find the muscles, and what is the nature of the muscles that show vigorous contraction at the time of parturition? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maternal pituitary, posterior pituitary से oxytocin आता है. मसल्स पे एक्ट करता है यूट्रस की. ये यूट्रस की मसल्स कहाँ प्रेजेंट है? इनरमोस्ट लाइनिंग में, मिडल लाइनिंग में, आउटरमोस्ट लाइनिंग में. और ये नेचर ऑफ मसल्स क्या है? आर दीज स्केलेटल मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, और दीज आर स्मूथ इनवॉलंटरी मसल्स? Wrong answer, Srimati. Endometrium is not muscular. Myometrium is muscular in nature. The myometrium is the middle lining of the uterus, which has smooth muscles which are involuntary in nature and are activated by oxytocin for ejection of fetus. याद रहेगा सबको? अच्छा जी, कौन मेरे को बताएगा कि this vagina that acts as a female copulatory organ opens to the exterior through a vaginal orifice. The vaginal orifice, which is covered externally by a female external genitalia, which includes dash, dash and dash. Female external genitalia में कौन से structures आते हैं? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It contains the mons pubis, the labia majora, the labia minora, the hymen and clitoris. All these structures are a part of female external genitalia. ठीक है? For your information, the elevated portion of the female pelvic region forms the mons pubis, where there are pubic hair present, and the mons pubis narrows down to your labia majora and labia minora. So these are your labia majora, which are folds of skin
I'm drawing them dotted so that you can understand the labia minora. They are lower lips which are present. Labia minora, which enclose an opening known as vaginal opening. And this vaginal opening is surrounded by small glands that are present in the vestibule. Since these are coverings, these are overlapping flaps, there is a cavity where these openings are present. There is a vaginal opening, there is a urethral opening. Who will tell me which is proximal, which is distal? Vaginal opening पहले आती है या urethral opening पहले आती है? Star question mark. एंड सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो तुम लोग थर्ड ईयर मेडिसिन में करते हो, जब आपको थर्ड ईयर मेडिसिन में जाते हैं ना, तो थर्ड ईयर मेडिसिन में ना पेशेंट्स में लेके जाते हैं हॉस्पिटल्स में, और जब तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पेशेंट्स होते हैं जिनमें यूरिनरी बैग लगे होते हैं, ठीक है, और आपको वो यूरिनरी बैग में से जो आपकी ट्यूब होती है जिसको हम कैथेटर बोलते हैं वो रिमूव करना होता है, ठीक है, या फिर कैथेटर इंसर्ट करना होता है, कैथेटराइजेशन करना होता है। अभी क्या होता है कि कैथेटर लगाते टाइम जब भी आपको पता ही नहीं है कि कौन सी ओपनिंग में कैथेटर लगाना है, एंटीरियर में या पोस्टीरियर में, प्रॉक्सिमल में या डिस्टल में, तो आधे से ज्यादा लोग तो वजाइना में कैथेटराइजेशन कर देते, पता ही नहीं होता यूरेथ्रल ओपनिंग कौन सी है, पढ़ते ही नहीं है एनाटॉमी, पढ़ते ही नहीं है मेडिसिन, तो फिर याद कैसे रहेगी, और फिर फेल हो जाते हैं मेडिसिन में, राइट? So it's very important to understand where is the urethral meatus present. Is it anterior or posterior to vagina? So for your information, the opening which is present anteriorly, the smaller opening, is the urethral meatus. The wider opening which is present posteriorly is the vaginal opening. So you're supposed to catheterize in the anterior opening, not the posterior opening, because external genitalia कभी पढ़ते ही नहीं है, ये तो में आता है, ठीक है? So these are the openings which are covered by labia minora, labia majora. Okay, and where these labia minora and majora, they converge, that point forms a fold of skin which is known as clitoris, ठीक है, which is basically the tip of labia majora and minora, that is actually the tip of the male copulatory organ, उसके एनालोगस होती है. So similarly, जैसे आपने labia minora analogous बताया था to the glans penis, the structure foreskin, the structure which is analogous to the glans penis is none other than the clitoris. ठीक है, the female external genitalia that you all wanted to know, मैंने बता दिया, the structure बता दिया, the hymen is the covering of the female vaginal opening which is perforated. आपकी female vaginal opening is perforated, क्योंकि अगर पूरी की पूरी आपकी वजाइना कवर्ड होगी तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहां से आएगा? The vaginal opening, the hymen is perforated. The fluid leaks from the perforation of the hymen. And in, as said, sexually inactive females, the hymen is intact. In sexually active females, the hymen breaks. Or maybe physically more active females who are very much into sports also have a damaged hymen. चलिए आगे. Coming to very important, आपका mammary glands. Who will tell me? Mammary glands are modified dash glands. They are modified sebaceous glands. They are modified sweat glands. They are modified tubular glands, or they are modified unicellular glands. Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanji. Mammary glands are modified sweat glands. They are tubulo-alveolar glands, and the mammary glands are responsible for production of milk under the influence of dash hormone. कौन सा hormone है जो इन modified sweat glands में milk production को induce करता है? टिक टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The prolactin
prolactin hormone. Which hormone? The prolactin hormone is responsible for secretion of milk in these modified sweat glands with a synergistic effect from two more hormones. With a synergistic effect from two more hormones. और कौन से दो हार्मोन है जो post parturition milk production in a female who was pregnant now is going to be nourishing the young one. The lactating female is produced by two more hormones called milk production की बात हो रही है, milk ejection की बात नहीं हो रही. Estrogen and progesterone, क्योंकि एक लैक्टेटिंग मदर में प्रोलैक्टिन हाई होता है, उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी हाई होता है. अब क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हाई है, तो हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंडिकेट्स दैट द फीमेल इज इन अ फेक प्रेगनेंसी, और हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच. दैट्स व्हाई a lactating female has high progesterone, low FSH, and no menstrual cycle, which is a natural method of contraception known as dash. Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. प्रोलैक्टिन तो मिल्क प्रोडक्शन करता ही करता है. प्रोलैक्टिन के साथ साथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी हाई होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. This is known as lactational amenorrhea, which lasts for about how much period? In a lactating female, it is for how much period? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's for about 6 months. है ना? तो इसमें एक assertion reason भी आता है, इसमें एक multiple statement question भी आता है कि कितने period तक होता है. ये 2 years गलत हो जाएगा. It's for a period of 6 months. Up to 6 months, varies from 6 to 8 to year maximum. Clear? Can you name any other natural contraceptive method besides lactation amenorrhea? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A natural contraceptive method besides lactation amenorrhea? Bhagwati, see, you have to have patience for at least 2 hours to complete 2 chapters. If you're having a headache, I would advise you, take a medicine and get better. खाया पिया करो टाइम से भाई. Periodic abstinence, that means no sexual activity during which period? And what is that time period of the menstrual cycle where there is periodic abstinence practiced? Withdrawal method, जिसको हम coitus interruptus भी बोलते हैं. Periodic abstinence is also known as the rhythm method. हम रिस्की पूछ नहीं रहे हैं, हम पूछ रहे हैं वो पीरियड कौन सा होता है. तो जितना पूछा जाए उतना जवाब दे भाई. अनावश्यक सूचना की कोई गुंजाइश नहीं है. What you call? The unsolicited advices are not welcome. It's known as the heat period, which extends from about 10 to 17 days of the menstrual cycle. Well done. What is the fate of the menstrual cycle if it is a fertilization? What is the fate of the menstrual cycle if there is fertilization? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The fate of menstrual cycle post-fertilization is that it is stopped till the time of development of embryo. And what is the time of development of embryo? It is known as the gestation period, which is of about 9 months, 40 weeks in a human reproductive cycle. And what is the fate of the menstrual cycle if there is no fertilization? It repeats after every 28 days.
What is the period when the menstrual cycle completely stops in a female? In a sexually mature female, the reproductive menstrual cycle comes to an end. कभी होगा नहीं होगा वाला सीन ही नहीं है, कभी होगा ही नहीं अब. That end of the menstrual cycle is known as dash. जैसे onset of the menstrual cycle is known as Meena. The end of the menstrual cycle is known as menopause. Puja ji, menopause, which is about 50 years at the age of female. Last section हमें इस चैप्टर का पढ़ना है, fertilization, implantation and आपका पोस्ट पार्टम और पार्चुरेशन. देखो फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है, एम्पुलरी रीजन. फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता क्या है कि आपका जो स्पर्म है, ठीक है, वो आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन होता है. आपके स्पर्म मेम्ब्रेन और एग मेम्ब्रेन के बीच में फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होता है. बट एग मेम्ब्रेन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्रोसोम से एंजाइम्स रिलीज करने पड़ते हैं. तो सबसे पहले स्पर्म जब ओवम तक पहुंचता है, it releases its acrosomal enzyme, the sperm license to digest the outermost corona radiata, zona pellucida, and comes in contact with the egg membrane, where there is a fertilizing anti-fertilizing reaction. And after the success of the fertilizing anti-fertilizing reaction, as the head enters the cone of reception, तो आपके जो कॉर्टिकल रीजन के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, दे बिकम सॉलिडिफाइड, प्रिवेंटिंग डैश. वो आपके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के हार्ड होने की वजह से क्या होता है, जब एक बार स्पर्म हेड एंटर कर जाता है, टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have acrosomal reaction, we have identification reaction, we have entry of sperm, which is followed by the cortical reaction that prevents polyspermy. It checks on the entry of more than one sperm in the egg by forming a solid covering after entry of one single sperm. This is called check on polyspermy. याद रहेगा. And once the egg receives the sperm nucleus, it completes its second meiotic division, and then the two pronuclei divide, fuse, and then divide to form the developing embryo. जब दोनों प्रोन्यूक्लियस बन गए, सेकेंडरी oocyte ने भी अपनी meiosis 2 कर ली, अब हमारे पास egg आ गया है. अब मेरे पास मेल न्यूक्लियस भी है, मेरे पास एग न्यूक्लियस भी है, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या फॉर्म करते हैं, zygote. And this zygote shows cleavage divisions to form the embryo. Which cleavage divisions? Which cleavage divisions do human embryonic development show? Tick tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमारा ह्यूमन क्लीवेज कौन सा है? जल्दी 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 जल्दी. Are they slow? Are they fast? Are they holoblastic, neuroblastic? Tick tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We have holoblastic cleavage, which is slow, which is asynchronous. ऐसा नहीं है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हो रही है, एक से दो, दो से तीन बनते ऐसे ही है, बट दे आर स्लो. कोई ज्यादा टाइम लेता है, कोई कम टाइम लेता है. फर्स्ट डिविजन टेक्स rather more time, and then sequentially the others are different. So it is holoblastic, slow and asynchronous. अगर equal और unequal पूछ लूं तो equal और unequal. Tick tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बेटा asynchronous का मतलब ही यही है कि they are unequal. हाँ, equal or unequal for human embryonic development.
कैसी बातें करते हो ना यार तुम लोग। जिन एग्स में आपके पास योक होता है ना, उन एग्स के अंदर आपकी मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, ठीक है। जिन एग्स में योक नहीं होता है उनमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। इज दिस थिंग अंडरस्टूड? So we have holoblastic unequal division. All mammals have holoblastic unequal division. Asynchronous unequal. याद रहेगा? इन ह्यूमंस देखो कई सारे ऐसे हैं, कुछ अनइक्वल बोलते हैं, कोई इक्वल बोलते हैं, इसलिए आज की डेट में हम उसको स्लो एसिंक्रोनस बोलते हैं. Many texts show that cleavage is unequal in mammals. It's holoblastic, but then first आपका इक्वल बताते हैं, उसके बाद फिर सारे अलग अलग होते हैं. So मैं आपसे बोलूंगी कि अगर क्वेश्चन आए तो एसिंक्रोनस को मार्क करना ज्यादा प्रेफर करना, ठीक है. शिवानी, टाइप्स ऑफ एग्स क्लिडोइक और नॉन क्लिडोइक एग्स होते हैं शेल के बेसिस पे. योक वाला जो आपका होता है कि जिनके पास योक होता है वो आपके क्लिडोइक एग्स है, जिनके पास योक नहीं होता वो नॉन क्लिडोइक एग्स होते हैं. योक वाले एग्स में क्लीवेज में डिफिकल्टी होती है, योक वाले एग्स में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, विदाउट योक वाले एग में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, ठीक है. अच्छा, अभी फर्टिलाइजेशन हो गई, हमारे पास क्लीवेज डिवीजन हो गई. ये क्लीवेज डिवीजन स्लो होती है, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं. अब आप यहाँ पे देखो, जब आपके पास 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बन रहे हैं, तो वो जो 16 सेल स्टेज होती है ना बेटा, उसको मोरुला बोलते हैं. 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मोरुला. The 13 cell stage is called your blast. 32 cell stage is called the blastula. And once the blastula loses its zona pellucida, it becomes the blastocyst. And that blastocyst has a cavity which is fluid filled, and all the 32 cells arranged in the form of a disc, which form the inner cell mass. And the zona pellucida is replaced by the cells of the embryo which move outward and become the extra embryonic cells, या जिनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, that form the extra embryonic membrane. बहुत क्वेश्चन आता है, the outermost covering of the blastocyst is formed of trophoblast cells. These trophoblast cells give rise to the extra embryonic membranes. The 4 extra embryonic membranes are chorion, amnion, allantois, yolk sac. Which amongst them is responsible for forming the human placenta? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, Kishan. Mammals alacithal होते हैं, without yolk, without shell. Am I clearly audible? कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है उसके थोड़ी ही देर बाद धीरे 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 आपकी क्लीवेज होती है, और ये आपका एम्ब्रियो रोल डाउन करता है फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इनटू द यूटेरस. And this uterus receives the blastocyst, where we have a cavity, we have the 32 cells arranged in a disc called inner cell mass, and we have an outer covering of this blastocyst which is formed of trophoblast cells. These trophoblast cells form the extra embryonic membranes, chorion, amnion, allantois, yolk sac. One of them is responsible for forming the placenta. Which is that? The chorion. Official AK, please correct yourself. Amnion is the one which protects the developing embryo. Amniotic fluid embryo को cover करता है और उसको बाहर से कवर करता है कोरियन, जो कि कोरियोनिक विलाय बनाता है और प्लेसेंटा बनाता है. ह्यूमन प्लेसेंटा इज हीमोकोरियल इन नेचर. वो मदर के कोरियन और बच्चे के, हम बोलते हैं मदर का ब्लड और बच्चे का कोरियन. The maternal tissue is the blood and the fetal tissue is the chorion. Fetus, developing embryo का क्या part?
प्लेसेंटा बनाता है कोरियन. The connection between the mother and the fetus is known as placenta, which is formed by a tissue from the mother and a tissue from the fetus. The maternal tissue is blood, the fetal tissue is the कोरियन. याद रहेगा बेटा, ये सारे लेयर्स एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, योक सैक, ये सब ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स. क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताओ कि अभी ब्लास्टोसिस्ट बन गया, उसके पास जोना पेलुसिडा नहीं है, उसके पास कोरियन भी बन गया, कोरियोनिक विलाई भी बन गया, उसने प्लेसेंटा भी बना दिया. दिस प्लेसेंटा acts as a temporary endocrine gland. जब तक फीमेल प्रेग्नेंट है तब तक उसकी बॉडी में प्लेसेंटा रहता है, and it acts as an endocrine gland. It releases certain hormones. Which type of hormones are released by the placenta? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Which type of hormones are released by placenta? Am I clearly audible now? All right. Sorry for the little internet issue, darlings. HCG, HPL, testosterone nahi re baba. HCG is human chorionic gonadotrophic hormone. When the gonadotrophic hormones are released, they are FSH, LH-like hormones, which promote the secretion of estrogen and progesterone. Okay, which are also secreted by placenta. So HCG, HPL, estrogen, progesterone. Clear? This placenta once formed, we say once this connection is formed between the mother and the fetus, that means the fetus has embedded in the uterine wall, and this embedment of the developing fetus in the uterine wall is known as implantation. Once the implantation has occurred, we call the female pregnant. जरूरी नहीं है कि fertilization के बाद implantation होगी ही होगी. So until the implantation occurs and there is formation of placenta and there is secretion of HCG, we do not call the female pregnant. Clear? There is another hormone which is secreted by the body, which is called relaxin. Can you tell me which is the two structure in the body which are responsible for secretion of relaxin? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये रिलैक्सिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? स्पेशली एनसीईआरटी में लिखा है ओवरी, एंड आपको पता है ओवरी में रिलैक्सिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? द कॉर्पस लूटियम. स्टार क्वेश्चन मार्क. Who's responsible for secretion of relaxin in the later phase of your pregnancy? It's the ovary. Which part of the ovary? The corpus luteum is responsible for secretion of relaxin at the time of parturition. There are another set of hormones जो वो बोलते हैं जो बढ़ जाते हैं during pregnancy. One of them here you are supposed to know is cortisol. The other is thyroxine. क्वेश्चन आ जाता है कि थायराइड लेवल्स आर रेज्ड इन डैश डैश एंड डैश इंडिविजुअल्स, या 5-6 नंबर दिए होंगे और आपको चूज करना होगा कि कितने लोगों में थायरोक्सिन हाई होगा. टॉक्सिक गोइटर लिखा होगा, मिक्स एडिमा लिखा होगा, प्रेगनेंसी लिखा होगा, टेटनाई लिखा होगा. तो आपको ये सब चूज करने की किन में थायराइड की कंडीशन या थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा होगा. इट्स एन अप्लाइड क्वेश्चन कि किन किन स्टेजेस में आपको थायरोक्सिन हाई मिलेगा, किन किन स्टेजेस में आपको कॉर्टिसोल हाई मिलेगा. कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. सो एड्रीनल कॉर्टेक्स की जब हाइपर सिक्रीशन होती है तो कौन सा डिजीज होता है? Which syndrome is characterized by hyper secretion of adrenal cortical hormone? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. We blocked fallopian tubes are one of the major reasons of ectopic pregnancy. Narrow fallopian tubes are another reason of ectopic pregnancy. Hanji, what is the condition where there is increased cortisol secretion in the body or increased adrenal corticosteroid hormones? Besides pregnancy, वो syndrome क्या है? जैसे हम बोलते हैं कि Addison's disease is hypoadrenalism. Which disease is associated with hyperadrenalism? Very good. Cushing's syndrome is related to hyperadrenalism. So ऐसे questions भी revise करते रहो जब आप chapter करते हो क्योंकि related questions ही आने वाले हैं. The hormone which is responsible for formation of or maintenance of pregnancy is progesterone hormone. And in pregnancy, when the embryo shows development, all the development of organs occurs from the 3 germ layers, that is ectoderm, mesoderm, and endoderm. So the organs which are arise from different layers, उसमें से आपको 4 तो minimum पता होने चाहिए. Central nervous system, ectodermal in nature. Connective tissue, muscles, and your skeletal system, mesodermal in origin. Notochord, dash in origin. Hanji, batao. Notochord is dash in origin. Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Notochord is mesodermal in origin. जैसे आपका नर्वस सिस्टम, आपके सेंस ऑर्गन्स, आपकी स्किन, आपका एपिथेलियम इज ectodermal in origin. Your musculature, your skeletal system, your notochord, your connective tissue is mesodermal in origin. And all the visceral organs mostly are endodermal in origin. ठीक है? याद रहेगा? Few landmarks that you're supposed to know with respect to your embryonic development. That first sign is the heartbeat. By the end of first month, 4 weeks, you get a heartbeat, right? By the end of second month, you get limbs, small digits आने लग जाते हैं जिनको हम limbs बोलते हैं. Second month, limbs and digits, finger. By the end of second month, 8 weeks, now the embryo has few developments of a heart, of limbs, slight head. So we call the embryo fetus now. After 8 weeks, a second month old embryo with a heart and digits and limbs is known as a fetus. The third month marks the end of the first trimester and beginning of your organ formation. आपके सारे organs धीरे धीरे बनना शुरू करते हैं. By the end of 6 months, all the organs in the body of the fetus are developed. The last trimester, 7th, 8th, and 9th month are just the maturation phases in which the organs develop slowly and gradually. तो कई बार डिलीवरी 7th month में हो जाती है तो भी बच्चा बच जाता है, 8th month में हो जाती है तो भी बच्चा बच जाता है. So 7th, 8th month are the last phases of pregnancy where the maturation period is taking place. Okay, so all the organs are well developed. बोलते by 12 weeks माने third month, major organ systems are formed, external genitalia organs are well developed, and this is the time after this 12th week scan अगर आप कराओगे then you can identify which is the sex of the organ, whether it is a male or a female, because external genitalia are well developed by the end of 12 weeks. The first movement of the fetus is observed during the 5th month, and at about the end of the 6th month or the 24th week or the third, the body is covered by fine hair. तो अगर fine hair वाला question आएगा तो by the end of 6th month, ठीक है, आपके पास hair आ जाएंगे, lids आ जाएंगी, eyelashes आ जाएंगी, सारी hair like extensions आ जाएंगी और 6th month तक सब कुछ बन गया. अब बस सब चीजों में डेवलप करना है. So 7th, 8th, 9th, all the fetal developments are matured and the fully developed fetus and placenta initiate the fetal ejection reflex.
मैम क्वेश्चन आता है ओवरी इज रिमूव्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर। आप देखो आपके पास ओवरी नहीं रहेगी तो आपके पास प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आएगा, आपके पास ईस्ट्रोजन कहाँ से आएगा, प्लेसेंटा से ही आएगा, सिर्फ उसके लेवल्स कम होंगे डेफिनेटली, तो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी विल बी वेरी डिफिकल्ट। आपके पास रिलैक्सिन नहीं आएगा ओवरी से, तो आप कैसे पार्चुरेट करोगे? तो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है मेरा। एमनियन इज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जिसके अंदर हमारे पास फीटल है ना, एक्टोडर्म मेसोडर्म का रोल होता है। तो इफ यू वांट टू नो आई कैन शो यू एन इमेज कि आपकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है उनमें कौन कौन से लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज उसमें फिर पूरा प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन आ जाएगा, आपकी मीजोडर्म की माइग्रेशन आ जाएगी, कहाँ कहाँ पे मीजोडर्म जाता है वो आ जाएगा, तो देन वो फुल लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्लास थोड़ी छोटी है तो थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एंड एक इमेज जरूर दे सकते हैं सो दैट इट बिकम्स क्लियर कि विच लेयर्स आर प्रेजेंट। क्लियर है? So we have ectoderm and mesoderm forming your amnion. Ectoderm on the outer side, mesoderm on the inner side. And you have an endoderm and the mesoderm. Let me show it to you. A more clearer one if I can. Not sure, but still I'll try. Meanwhile, the image opens. If it does, okay, let's visit. Internet slow, man. Is slow. Is slow. The image is not that clear, but I can still show it to you. Can you appreciate? Can you appreciate the colors? The green, the red, the black, the blue. Can you? So we have an embryo. The embryo which is covered by amnion. तो ये जो red और green lining आपको दिख रही है, that's amnion, darling. दिख रही है, and these red and green are your dermal layers. These dermal layers. Which are covering the embryonic structure. दिख रहा है? Here the red and green are replaced by red and blue. Can you appreciate the chorion, the amnion, the allantois, and the yolk sac? The inner one was more refined, less complex. Okay now? चलें. Why not? फर्स्ट में भी तो प्लेसेंटा होता है, फर्स्ट में भी तो प्लेसेंटा होता है, तब भी तो वो हार्मोन बना ही रहा होता है. सेकंड में भी प्लेसेंटा ओवरी निकाल दोगे तो भी तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाएगी. सो व्हाई नॉट? Shall we move to the text back? All right. Coming to parturition and lactation, we have done parturition. एक fully developed fetus करता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, लेबर आ जाता है.
लैक्टेशन आपके प्रोलैक्टिन की वजह से होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, एंड द फर्स्ट मिल्क दैट कम्स आउट इज कोलेस्ट्रम व्हिच इज रिच इन एंटीबॉडीज. व्हिच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट? फर्स्ट organ formed is heart. Which antibodies are present in the colostrum? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's the antibodies which are IgA in nature. Wonderful. तो फटाफट से रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख लिया हमने. नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में डिस्कस कर लिया. लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल मेथड्स व्हिच कैन बी फिजिकल, केमिकल और they can be intrauterine. Can you name certain physical barriers that are used as contraceptive measures in females? Hanji, barrier method that is used for contraception is a physical barrier method where we have agents that act as a barrier between the male and the female fluids, which are the specific ones that are used for females. Like for males, we have condoms as a barrier method, right? Physical. Likewise, females have barriers that can be named as a female condom, a vault, a diaphragm, and a cervical cap. Right? Acha. Can anybody tell me what are the chemicals that are used as contraceptive methods? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फेरस आप बोलते हो मैम थोड़ा डिटेल में पढ़ा दो. किशन बोलते हैं मैम थोड़ा फास्ट पढ़ा दो. कोई बोलेगा मैम छोड़ो ना क्या करना है पढ़ के. तो मैं तुम्हारी सुनती रहूंगी तो मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं पाऊंगी. सो प्लीज लेट मी डू इट ऑन माय ओन पेस. डाउट तुम्हारा कोई नहीं रहेगा ये पक्का श्योर बात है. They are creams, jellies, which we use as chemical methods. Spermicidal creams and jellies. Perfect. When we talk of hormone involved in contraceptive methods, we talk about oral pills. Oral pills which can be steroidal or non-steroidal. Can you name one classical non-steroidal preparation that acts as an oral pill, which is a non-steroidal preparation developed in our country? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rajat, ऐसा कोई टेक्निक है ही नहीं. When it's fast, it's rapid. It's not detailed. It's capsule. So we kind of doing capsule study in terms of questions. कि जिस तरीके का क्वेश्चन आएगा. Non-steroidal preparation. देखो पूजा प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन तो स्टेरॉइडल हो गए ना. तो non-steroidal कौन सा होगा? सहेली. For how many days are you supposed to take it? What is the frequency of taking Saheli? Star question mark. Saheli is a non-steroidal preparation. It's a once a week pill with a higher contraceptive value. Progesterone, estrogen like contraceptive methods are steroidal preparations and they are supposed to be taken for 21 days. The pill जिसको हम बोलते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होता है for a period of 21 days and then we give a gap of 7 days and continue after the menstrual cycle. Likewise, जैसे हमारे पास hormone preparations हैं, these hormone preparations can be given in the form of implants, also as intrauterine devices. Can you name any two hormone releasing intrauterine devices? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hormone releasing intrauterine devices. Progestasert and LNG20. Progestasert and LNG20 are the two hormone releasing IUDs
which act by, how do they act? ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कैसे एक्ट करते हैं? ये कॉपर रिलीजिंग जैसा तो काम करते ही है, प्लस दे मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स। कॉपर वाला काम भी करते हैं, जो कॉपर करता है वो भी करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हार्मोन वाले, प्लस दो चीजें और करते हैं, इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल कर देते हैं, सर्विक्स को होस्टाइल कर देते हैं। तो कॉपर वाले ऐसा क्या करते हैं? कॉपर वाले क्या क्या काम करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉपर आयंस स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट, they are responsible for the reduction in the sperm motility, कैपेसिटी को कम करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो हार्मोन है वो इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल कर देते हैं, सर्विक्स होस्टाइल कर देते हैं। तो अगर की वर्ड पूछा जाए कॉपर क्या करता है, वो स्पर्म मोटिलिटी कम करता है, स्पर्म फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम करता है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं, यानी alter the cervical mucus. What is sterilization? It's the terminal method of contraception where we cut the ducts which are responsible for transport of gametes. But that does not mean कि duct काट दिया तो gamete बनना बंद हो जाएगा, gamete बनेगा, बस वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। फीमेल्स का इसलिए नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ओविडक्ट्स को कट कर देते हैं, ट्यूब्स को कट कर देते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। मेल्स में क्या होता है कि हम वो डक्ट कट कर देते हैं जिससे हमारा मेल गैमीट ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, दैट मींस वास डेफरेंस को कट कर देते हैं, तो मेल गैमीट समाइनल वेसिकल तक पहुंचता ही नहीं है। तो समाइनल वेसिकल अपनी सिक्रीशन देता है, यूरेथ्रा के पास प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल की सिक्रीशन आती है, बट हमारे पास उसमें स्पर्म नहीं होता, तो सीमन विदाउट स्पर्म इज इजैक्युलेटेड। There is no harm done to the reproductive capacity of an individual, to the sexual drive of an individual. The only difference is the gamete is not transported to the site of fertilization. And since vas deferens is cut, we call it the vasectomy. Is this thing clear? एक और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में हम बात करते हैं जिनको हम इमरजेंसी पिल्स बोलते हैं, which are a combination of again estrogen and progesterone in high ratio given 72 hours post coitus. Is this thing clear? Very effective and reversibility. When was the Medical Termination Act given? When was it amended? एक अमेंडमेंट हमारी 70s में आई थी, दूसरी अमेंडमेंट हमारी 2017 में आई है। What is that? कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हो अगर 2 से ज्यादा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एडवाइस करते हैं, तो कम से कम 2 से 3 लोगों का पैनल बोलना चाहिए, यस करना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज एडवाइज्ड। एंड यूजुअली इट इज डन इन केसेस ऑफ व्हेन द हेल्थ ऑफ द मदर is compromised, in cases of delivery, or the young child which is under development is having certain genetic disorders which have very less chances of survival after delivery, जिसका सर्वाइवल रेट 1 या 2 साल का ही होता है। ऐसी प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट कर देना ही डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। इफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द चाइल्ड इज 14, 15, 16 years, then the pregnancy termination is not advised. But if the life expectancy is of only 1 or 2 years post delivery, then the pregnancy is supposed to be said कि let's not let the child develop further so that it's not a painful process post delivery. बेटा ओवा का मेंस्ट्रुएशन से कोई लेना देना नहीं है। मेंस्ट्रुएशन इज द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, यूट्रस की लाइनिंग शेड करती है, तो ओवा आए या ना आए यूट्रस को उससे मतलब नहीं है। यूट्रस को मतलब है मुझे मोटा होना था बच्चा रखने के लिए, बच्चा आया नहीं तो मेरे को मोटा होने का कोई फायदा नहीं, शेड द लाइनिंग, एंड इट इज कंप्लीटली अंडर हार्मोन रेगुलेशन। इज दिस थिंग अंडरस्टूड? Until what week is medical termination allowed? 12 weeks. अगर 12 से 24 के बीच में करनी है तो फिर
2 से ज्यादा डॉक्टर का कंसेंट होना चाहिए. What are the sexually transmitted diseases also known as? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What are the sexually transmitted diseases also known as? Venereal diseases. And the most common viral sexually transmitted disease is none other than AIDS, whose causative agent is HIV. Can you name any other sexually transmitted diseases which is viral in nature? Viral in nature. It's anybody? Hepatitis B, genital warts, genital herpes. These are all viral venereal diseases. How about bacterial venereal diseases? I have gonorrhea, syphilis, even chlamydiasis is considered as a bacterial disease. How about आपका helminthic diseases बोल देते हैं या protozoal diseases बोलते हैं. Trichomoniasis is a protozoal disease. Protozoal sexually transmitted disease. Trichomonas vaginalis, which is a protozoa, a flagellated protozoan. All these viral diseases like herpes or for that matter hepatitis can also, especially hepatitis B, can also spread through infected blood, can also spread through vertical transmission from mother to the fetus, which is also known as a direct transmission. Clear? Vertical transmission because they can cross the placenta. We know the preventive measures: no multiple sexual partner, more sex education, use of contraceptive measures. Last and final, assisted reproductive techniques. एक तो full form बहुत आता है. एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा assisted reproductive techniques से कि बताओ गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है. गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. इक्सी का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. These are assisted reproductive techniques which are employed for couples who are not able to conceive naturally or which are not able to give birth to young ones because of certain problems in their reproductive organs. Maybe they're not able to form gamete, maybe they're not able to show fertilization, maybe the female body is not able to keep the fetus for a longer period in the uterus. Many reasons. So usually question इसमें से क्या आता है? इक्सी का फुल फॉर्म बताओ. इक्सी कब किया जाता है या प्रोसेस क्या है? तो जब सीधा डायरेक्ट स्पर्म को साइटोप्लाज्म ऑफ द एग में डाल दिया जाए तो वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ठीक है. गिफ्ट और जिफ्ट पे पूछा जाता है भाई गैमीट को कब फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे और जाइगोट को कब फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे. तो बोलते गैमीट यूजुअली तब डाला जाता है या तो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस ना करती हो या फिर मेल में जो गैमीट का नंबर है वो बहुत लो हो तो उनको डायरेक्टली गैमीट को फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है कि कोई अनसर्टेनिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ना हो. Talking of ZIFT, which is the most common method that is done after in vitro fertilization, ज्यादातर हम जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करते हैं या हम बोलते हैं जब हम एक इन विट्रो एनवायरनमेंट में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो हम फेलोपियन ट्यूब में अप टिल 8 ब्लास्टोमियर्स वाले एम्ब्रियो को डालते हैं. तो जो अभी तक मोरुला नहीं है, जो अभी तक ब्लास्टुला नहीं है, उसको हम जाइगोट ही बोल देते हैं. तो इट इज यूजुअली कॉल्ड जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. अगर वो 8 सेल से ज्यादा होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो मोरुला या ब्लास्टुला स्टेज है, तो फिर हम उसको यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर जिसको बोलते हैं. तो IVF IUT इज व्हाट इज इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर. ठीक है. तो अगर 8 सेल से कम है तो जाइगोट और 8 सेल से ज्यादा है तो यूटराइन. स्पेशली आपकी एनसीईआरटी में ये बात मेंशन करी गई है. अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स फेलोपियन ट्यूब, more than 8 blastomeres into uterus, and this is about in vitro fertilizations. आपको ये भी बोला जाता है कि जो naturally formed embryos हैं हम उनको भी निकालकर
असिस्ट कर कर किसी और फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं एज सरोगेसी। याद रहेगा। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? इट्स द प्रोसेस ऑफ transfer of the male semen into the female reproductive tract. It's also a type of assisted reproductive technique practiced in humans. Understood? Any doubts, anybody? I tried to explain each and everything so that whatever question comes from human reproduction or reproductive health, at least the base behind that question is what you should know. Whether it's menstrual cycle, not natural conception, whether it's artificial method of contraception, intrauterine sterilization, diseases, techniques, plantation, your lactation, your parturition, your gamete formation, your hormone control of gamete formation, your organs, your important questions with respect to the structure of the organs, whether it's intratesticular duct system, whether it is mammary glands. You should know about each and everything because they can ask the question. It's a very important chapter. It is related to genetics, it is related to hormones, it is related to reproduction. So everything about it is very important. Clear? If yet you have any doubts, you can master the chapters by practicing question with us tomorrow morning. So the same time as we have about 10:30, 11, we will have a question discussion session on both the chapters so that if there is any doubt, we can clarify it tomorrow. All right? Honeybee, we can discuss it tomorrow, shall we? Chale. So have a very great evening. Enjoy your chemistry class. Have a further लर्निंग सेशन। अब बिल्कुल अपनी ना क्या कहते हैं ना कमर कस लो, एक के बाद एक के बाद एक, बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, क्रैक करना है, यही दिमाग में होना चाहिए। सर दर्द, पेट दर्द, ये दर्द वो दर्द सब भूल जाओ। ठीक है भगवती? Thank you so much for coming and attending the class. Please, please, please be consistent. Try to practice as much as questions as you can. Good night.